ये बहुत solid question है तुम्हारा. I'll be honest with you. Even I struggle to study from at the same place. ठीक है? It is so difficult to study nowadays. Like this wasn't the case 2-3 years back. So hello everyone, today we have Dr. Anuj here. It's an honor to welcome him. He just completed his MBBS and आज हम जानेंगे what is the life of doctor in India after MBBS, and he is not just a doctor, he is a YouTuber and he is a productivity YouTuber. मैंने काफी कुछ सीखा है इनसे. I'm a big fan of Anuj and let's get to learn about his journey. So hi Anuj, can you please introduce yourself? Hi bro, thanks Arnoor. Thanks a lot. I've been a fan of your channel since a very long time. Before even I had my own channel, my engineering friends used to tell me about this guy Singh in USA. He makes great videos. So you're very famous here in the Indian community, especially with respect to the JEE and engineering people. So you're very inspiring, and thank you so much for inviting me on this podcast. One small correction: my MBBS is not technically over. I'm a doctor, but my MBBS is just like 8 or 9 months is remaining because my internship is left. So apart from that, for all practical purposes, I am a doctor. But the internship part बचा है. Totally understand. तो how is your life going? तो internship के साथ आपको मतलब पढ़ाई भी करनी पड़ती है या फिर it's just internship your focus right now? Right. So this is a great question. Internship in MBBS for people who are IMGs, right? जो हमारे इधर के लोग हैं. For them it's 1 year, and for me, including myself, so it's 1 year. And there are two types of people in our internship, right? One is the person who will be completely focused on doing the internship because he wants to learn, gather experiences, and does not want to stress out so early. The other is the one who wants to study for NEET PG along with balancing the internship. So NEET PG is an exam which you give after the internship is done for most cases. And that exam determines what kind of specialty do you want to be in. So let's say that I want to be a radiologist, right? So the rank which I get in NEET PG will determine whether or not I will be able to get into that specialty. So it's similar. You can compare it to JEE mains. कि mains में अगर अच्छा rank आया so you'll get CS. अगर नहीं अच्छा you'll get metallurgy or something like that. So it is the same phenomena but applied in medical sciences. So if you are a student who is like balancing internship and studies, it gets hectic, especially during the heavy postings. So heavy posting, that means you will be gone from home at least 8 to 12 hours. Sometimes even 24 hours a day. So that at that time, studying is only possible when you are in the hospital or if you are very dedicated, तुम library में जाके पढ़ रहे हो. So I'm trying to be the second kind of student who is trying to balance. So yes, it has been difficult along with content creation as an added feature to my life, I would say. So yes, but I am really enjoying the process because I don't have to worry about exams. कि जो repeated exams होती है MBBS में, वो भी internship में नहीं है. वो एक ही exam देने, NEET PG हम देंगे हम 8-9 महीने बाद. एग्जाम्स तो बहुत स्ट्रेसफुल लगते हैं. आपकी वीडियोस में मतलब इतनी बड़ी बड़ी बुक्स, वो भी एक नहीं 5-6 बुक्स खत्म करनी होती है. हाउ डू यू फील अबाउट दोस? You see those books. So I just shot a video yesterday. I just addressed the same topic itself. There are books. मतलब MBBS is a very what do you say heavy with respect to the amount of reading you have to do. Compared to other courses, मतलब मैं compare तो नहीं करूँगा, but I'm just saying it's one of the places where you have to read a lot. अब उसमें से याद तुमको हर चीज़ नहीं रखनी है, बट तुम्हें एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है. तो यार पढ़ाई रहती है उसके लिए. देयर इज नो शॉर्टकट. एवरी डॉक्टर स्टडीज अ लॉट and even after your MBBS is done, you cannot stop. You have to keep updating your knowledge. एज एन इंजीनियर मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है, क्योंकि मैं अगर मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ने को मिलती है ना, हम जुगाड़ ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि चलो यार ऑडियो बुक्स, इसका पॉडकास्ट सुन लेते हैं, इसका यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल देख लेते हैं. वी स्टे अवे फ्रॉम रीडिंग. तो आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया टू रीड सो मच? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम 12th तक स्पून फीड कराए जाते हैं, टीचर हमें एक एक टॉपिक पढ़ा देता है इतने अच्छे से कि हमें खुद पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ. देन हाउ डिड यू प्रिपेयर योर माइंड टू बी अ रीडर? So I would say that it's very difficult in the starting. So first and second year में everybody is overwhelmed with this. Mostly because college होता है, and then you have your ragging होती है. India में it's very common that you will spend like 2 hours in the evening with your seniors, and so the time is just gone away. So whatever short time you get, we have to dedicate it to studying. Otherwise, there is no escape. I mean, you have to read it either at the end. एक महीने में तुम 24 घंटे पर आवर ड्यूटी करके पढ़ लो, या तो फिर तुम हर रोज 2-2 घंटा करके पढ़ो ताकि तुमको एंड पे उतना ज़्यादा ना करना पड़े. So what I personally learned was that if I study every day, then I won't be burdened at the end. So that was my biggest, what I would say, that is how I got into the habit.
And once you start reading every day, what happens is it does not feel like work. It just feels कि चलो normal सी चीज़ है जो मुझे करनी है, मैं कर रहा हूँ. And you find clever ways to, try to make it interesting as well as try to balance your time according to your reading. So I remember in first year, I had morning classes till 9. So I used to wake up at 6:30, read 2 hours, then go to the class. So, and in the evening, I would just enjoy because मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हो गई. That's all I could care about. And अगर college में भी, if I have to stay for some extra work or some, fun with my friends, then it wouldn't bother me. So I would say the only way I, taught myself to read fast and to read effectively was to just be consistent at it. So I would say that is the core of it. इनक्रेडिबल. एंड रैगिंग इंडिया में होती है, मुझे पता नहीं था, क्योंकि यार जितने भी मेरे कजन्स हैं पिछले 10 सालों में, जब भी वो चाहे टॉप इंस्टीट्यूट लाइक IIT, चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज ऑफ इंडिया जाते हैं, साइन करवाते हैं रैगिंग का. लाइक इज इट? हाँ, सो सी इन मेनी कॉलेजेस उतना नहीं है prevalent, but in medical colleges, especially in central India, I would say it is quite a lot. मतलब I would say in my college also it's happening, in other colleges also it's happening. So especially in Maharashtra as a state, I would say 90%, 95% of colleges में होती है ragging. It's not as severe as it used to be like 30 years ago, जब literally violence होता था full blown, ऐसे चाटे वाटे मारते थे. तो ऐसा होता था, मतलब ऐसा बोलते थे कि तुम सब लोग ऐसे लाइन बनाओ एंड एक में को चाटे मारो, आवाज नहीं रुकनी चाहिए. तो दिस वाज द अमाउंट ऑफ रैगिंग दैट यूज्ड टू हैपन 30 years ago. नाउ इट्स नॉट एट ऑल. अभी नाउ इट्स लाइक चलो डांस करके बताओ, गाना गा के बताओ, जाओ कुछ शॉप में से ये कुछ अजीब सा आइटम खरीद के लाओ. सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ वे द सीनियर्स यूजुअली हैव फन विद द जूनियर्स. अभी ऐसा सीरियस वाला मोस्ट ऑफ द जगह पे नहीं होता है, थैंकफुली. ओह, तो स्ट्रेसफुल तो नहीं लगता ना रैगिंग? ऐसा तो नहीं है कि टेबल नंबर 21 की तरह? नहीं, इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता रे. मतलब देखो, जो स्टूडेंट्स है जो नहीं उस चीज के लिए रेडी है या कुछ भी है, उनको कोई कुछ नहीं करता. जो ज्यादा फ्रेंडली रहता है जूनियर्स अपने सीनियर्स के साथ, उनका ही थोड़ा बैंड बजता है. बट इन द एंड व्हाट हैपेंस इज यू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद द पीपल, द सीनियर्स, एंड दे हेल्प यू अ लॉट इन योर थ्रू आउट योर जर्नी. आई पर्सनली हैव नेवर रैग्ड अ सिंगल पर्सन इन माय लाइफ. मैंने कई लोगों को बचाया है बाय आस्किंग देयर सीनियर्स, जो मेरे जूनियर्स है, कि ऐसा मत करो इनके साथ. सो मैं तो अगेंस्ट यू ये सब चीज़ों के, बट एज लॉन्ग एज जस्ट नॉर्मल वाला फन है तुम्हारा, बड़े भाई छोटे भाई वैसा, तब तक ठीक है. उसके ऊपर अगर जा रहा है तो आई थिंक वी शुड स्पीक अबाउट इट. Yeah, absolutely agree. And coming back to the topic of reading, तो आप ऑडियो बुक सुनते हो? मैं अपने कॉलेज के दिनों में एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करता था किसी भी PDF को ऑडियो में कन्वर्ट करने का, ताकि मतलब अगर एयरपोर्ट पे बैठा हूँ तो आई कैन जस्ट बी प्रोडक्टिव, लाइन में खड़ा हो. तो ये मुझे प्रोडक्टिविटी हैक मेरा एक फेवरेट है. आपका क्या प्रोडक्टिविटी हैक है जो आप शेयर करना चाहोगे, जो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है इन योर मेडिकल जर्नी? ये ऑडियो बुक वाला बहुत सही है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है बिकॉज प्रोनाउंसिएशंस और वो सब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब ऑडियो बुक्स में करो कुछ और भलता ही बोलते रहते हैं. सो एनीवेज द हैक व्हिच आई पर्सनली यूज इज आई यूज दिस वेबसाइट कॉल्ड एज bigtimer.net. दे आर नॉट स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो और एनीथिंग, बट इट्स द वेबसाइट. उसमें तुम ना टाइमर लगा सकते हो. सो आई सेट अ टाइमर फॉर 60 minutes मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई एम लाइक बस एक घंटा पढ़ना है, एंड दैट इज 60 minutes, बस 1 घंटा. सो दैट इज द इनिशियल इनर्शिया जो होती है ना, कि भाई बैठो टेबल पे बुक खोल के पढ़ो. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. So once you just start with that timer, okay, what will happen? Your body will automatically go into flow. And whenever you are distracted, और phone आ गया मुझे, so what will happen कि you instead of being distracted, like एक ही घंटा पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ लेते हैं, phone side में रख दो, बाद में बात करें. Once that 1 hour happens, you automatically feel एक और घंटे के लिए करते हैं. ऐसे you will spend 3 or 4 hours just like that. So I think that breaking the inertia वाला जो part है, big timer helps a lot. You can do this with literally anything. iPad लगा के उसमें तुम स्टॉप वॉच शुरू कर दो, बट आई यूज दैट वेबसाइट बिकॉज इट कवर्स द एंटायर स्क्रीन. बहुत ड्रामेटिक होता है जब टाइमर एंड होता है, तो ह्यूज बैंग एंड अपलॉड होता है, तो इट्स प्रीटी गुड. दैट इज ब्रिलियंट. ऑनेस्टली आई टोटली एग्री. ये मोटिवेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है. एंड आपकी वीडियोस मैंने एक और एडवाइस भी सीखी है कि बाद में जो 5 minute ब्रेक है, उसके लिए आप जब सोचते हो कि वो लेनी है, तभी सारा कुछ खत्म कर लो. दैट इज ऑल्सो ग्रेट आइडिया. या वंडरफुल. सो टॉकिंग अबाउट योर इंटर्नशिप, आप इंटर्नशिप के साथ आप नीट पीजी की तैयारी कर रहे हो, आई बिलीव. जी. सो नीट पीजी इज फॉर फ्यूचर, लाइक एमडी के लिए होता है, एमएस के लिए होता है? व्हाट एग्जैक्टली एमडीएमएस के लिए होता है. सो एमडी और एमएस आर टू ऑफ द स्पेशलिटीज. डीएनबी भी होता है इसमें. So these are the 2-3 specialties offered by NEET PG. So according to your rank, you can select a college/branch.
ब्रिलियंट। एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रांच आपको अभी से डिसाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि काफ़ी जो डॉक्टर्स आते हैं यूएस में आते हैं, जो यूएसएमएल के आते हैं, वो मन बना के आते हैं कि यार मुझे इंटरनल मेडिसिन लेनी है या फिर मुझे सर्जन बनना है, वो मैचिंग प्रोसेस के लिए रेडी होके रहते हैं। तो आपने भी अभी मन बनाया हुआ है कि आपने क्या लेना है? राइट, सो ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस होता है, हर डॉक्टर के साथ ये होता है। आई मीन जितने भी सीनियर्स और जूनियर्स मैं अभी जिनसे बात करता हूँ, दे जस्ट टेल मी दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज कि क्या करना है, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करना है। सो एवरीबडी एटलीस्ट नैरोज इट डाउन टू 2 different branches. Okay, so one branch is the medical branch. That means internal medicine is one great example. That means a patient is coming to you, you don't do a surgical intervention for him, you just prescribe medicines, you think about how to diagnose the disease, you diagnose it, and the mainstay of treatment is using medicines, right? But the other type is surgical. So that is like जो दिख रहा है काट के फेंको, मतलब that is in short surgeon जो होते हैं, we do that. So as a surgeon it could be like ENT वाले surgeons हो गए जो tumors across the ear, nose and throat. There could be general surgeons, hernias, hydrocele, GI वाले operations. There could be orthopedicians, there could be obstetrics and gynecology, there could be ophthalmologists. So all of these people are surgeons. So at least we know कि I want medicinal branch or I want a surgical branch. So I have decided upon a surgical branch, and in this surgical branch I'm still not sure what kind of a doctor, what kind of a surgeon I want to become. In the internship when we are posted in different departments like ortho, like surgery, or so then you get the exposure कि okay, this is what my life will be looking like, and then you actually decide. So currently I have no idea, I just know that it's going to be surgical. उसके आगे I don't know. दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। काफ़ी लोगों को पैशन पता नहीं चलता यहाँ पे भी, पर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है ना उसका। आपको डर नहीं लगता थोड़ा सा कि यार एक बार चूज़ कर लिया, बाद में लगा कि नहीं यार मुझे ईएनटी में जाना चाहिए था, बाद में लगा कि मुझे कुछ और बनना चाहिए था, वो फीलिंग का डर नहीं लगता आपको? तो ये एक्चुअली होता है, कई लोगों के साथ होता है, एंड यूजुअली मैं देखा है दिस हैपेंस ओनली विद टॉपर्स. सो व्हाट हैपेंड इज लाइक आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस पर्सन who cracked the INI-CT exam. It is a similar exam to NEET, but for only AIMS. So, and AIMS and other few institutes. So he joined the course of medicine over there, right? And he was all India rank under 10. So guy joined medicine, 6 months he was unhappy, he left. Okay, he left medicine. Then he gave NEET PG, got some other college, took surgery. So he changed the field completely. And this happens quite frequently. Many people it first 6 months only realize that this is not something they're going to be doing for the rest of their life. So पहले से they decide कि okay, I'm going to change. But for 99% people, whatever branch they get, they usually choose, because almost all branch in medicine are superb. So yeah. ये होता है, मतलब थोड़ा सा डर तो होगा ही इसका। पर होता है। पर इंडिया में सिर्फ MBBS से क्या हो सकता है? मतलब आर यू लाइक, डू यू थिंक इज अ गुड इनफ फाइनेंशियल डिसीजन टू जस्ट टू MBBS एंड स्टॉप देयर? काफ़ी मूवीज़ मैंने इंडिया में देखी हैं, लोग कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कमाते हो, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर पाते हैं अपना क्लिनिक खोल के। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? Yeah. So my perspective is, if you want to stop only by doing MBBS, and the thing is, we are assuming that you are going to be doing some sort of a practice after you have done your MBBS as a doctor. So there can be a lot of things to consider. First of all is, have you done your MBBS from government or private? The main reason is private को करने को lakhs and crores of rupees are just gone. So that is the main issue. Like I think you might know this a lot. So lakhs and crores are just gone. So to recover that lakhs and crores as a clinical practice by just being an MBBS person will take you years and years and years. But if you have done from a government institute where the fees is max to max 1 lakh per annum, so 5 lakhs of MBBS khatna hai, you can extract that 5 lakh in just 5 months of your course. So that is the difference. So if you're a government doctor, right, and if you have done your MBBS, there are a lot of options open for you. First of all, you can join as a normal doctor itself, as a CMO, Chief Medical Officer, in any central institute or any state-run institute, and you will be offered decent pay according to which city you have got. Like in USA, I think this is very prevalent. City to city payment differs because quality of life change हो जाती है, right? So same, like for example, if you go to Delhi, the CMO will be earning 1,10,000, 1,20,000 per month. If you come to Nagpur over here, just MBBS के बाद. And if you per month, and if you come to Nagpur, it will be like something like 60,000-65,000 per month, because Nagpur is way cheaper than Delhi with respect to living and food and everything. So that is you can earn that much. That is if you are joining a government job, तुमको सरकार पैसा दे रही है, depending on central or peripheral. Now the real bread and butter comes when, let's say that you are belonging to a village. Okay, so Nagpur के पास एक village है वाणी करके, ठीक है?
So let's say you're belonging to any, you're the first doctor in your town, you have done your MBBS from GMC Nagpur, then you're like, okay, I want to do my own practice in my village. You are the most famous kid over there. You start your own clinic, start it slowly, you do the OPD every day. In OPD, you just take 20-30 patients. From each patient, you take 100 rupees or 200 rupees. And from that, you gradually build a practice. So what I've seen is doctors who are running in peripheries, not in big cities, are way more successful than the doctors who are currently doing their jobs in the city. Because in the periphery, saturation is zero. You are the only doctor for every single ailment the person is going to complete. In the city, if you have a thyroid problem, you'll go to endocrinologist. If you have, let's say, a cough, you'll go to a respiratory medicine person. But whatever you have in periphery, that's just one doctor. You're going to go there and you're going to get treated. So in periphery, business is very successful. But of course, you can also continue your education in some other platforms as well, such as hospital management is present, which is a very big upcoming sort of endeavor which people take, in which you learn everything about hospital management, the biological waste management, the employment, the business aspect of it. And if you can tie up to various hospitals, you can just run these hospitals by yourself, the management aspect. So a lot of fields are open. It all depends upon what your personal choice is. Some people join different applications. So Marrow is one of such applications which employs doctors to make question banks for NEET PG. So Marrow pays, I think, 55 to 65K every month just to work for 6 to 8 hours over there. So yes, everything is open, and I would say it is absolutely worth it, especially if you're from government college. If you're from private college, it might take you longer to recover that amount, but in the end, eventually you will. It will take years, but eventually you will. तो मैं यही बोलूँगा उसके लिए. क्या बात है. तो prospects are definitely there, पर depends from city to city. जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे different हो सकते हैं. And अगर आप periphery में या फिर village में करते हो, आपको बहुत diversity के patients हर तरह के मिलते हैं. Exactly. I'll just tell you a real story if we have the time, that is. Yep. So a real story is like, there was this orthopedician in Nagpur. He was one of the best orthopedicians with respect to the amount of degrees he had. So, but the unfortunate thing was he was not getting enough patients. I don't know what the reason was, but he was not able to generate that many patients like some other MS ortho person was going to get. What happened was that for some reason they had to shift to their old gaon. गाँव में शिफ्ट हुआ. गाँव में he started his practice. What he was earning in Nagpur, that just immediately went 20 times. What he was earning in Nagpur, उसका 20 times हो गया गाँव में. With the same amount of degrees, but in a new setup where saturation is zero. So that is the power of utilizing, whether you are going to be staying in the center or the periphery. कई लोग होते हैं, they just travel from center to periphery almost every day. So 1-2 घंटे का travel होता है, but in the end they generate that much revenue, right? So yeah, that is the mainstay over here. क्या बात है. पर इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि कुछ लोग MBBS से बहुत कुछ कर पाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते. एंड बिगेस्ट डिफिकल्टी इन इंडिया इज कि MBBS बहुत एक्सपेंसिव है. कुछ लोग यूक्रेन में जाना चाहते थे इन द पास्ट, क्योंकि MBBS जिनकी गवर्नमेंट में नहीं होती, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड इसके कारण मैंने रिसेंटली देखा कुछ लोग अपने आप को डॉक्टर कहते हैं अगर वो अगर वो अपनी डिग्री करते हैं इन आयुर्वेदा, वो अपने आप को डॉक्टर मानते हैं, पर उस डिग्री का नाम MBBS नहीं है, वो है आई थिंक BMIS है, आई बिलीव, इफ यू कैन करेक्ट मी. BMS, यस, या आयुर्वेदा इन अदर एरियाज में. तो आपका क्या मानना है, क्या वो भी डॉक्टर है कि नहीं है? देखो, ये बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, बट मैं इसमें मेरा पर्सनल नॉन कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दूंगा. सी, द थिंग इज लाइक, इफ योर डिग्री परमिट्स यू एंड टेल्स यू दैट यू आर अ डॉक्टर, then with all practical purposes you are a doctor, because you haven't judged it, your degree is telling you कि तुम हो. ठीक है, doctor in Ayurveda, a doctor in homeopathy, a doctor in allopathy. We are practicing allopathic medicine. That means the modern medicine which is evidence-based, we are practicing that. So we are doctors in allopathy. They are doctors in Ayurveda. Dentists are doctors of the oral and mouth cavity. So whatever your degree, if your degree says, so you don't have any, तुम नहीं बोल सकते फिर मैं वो नहीं हूँ. It is not your choice. You are what you are. The problem arises when, if you have done, let's say, Ayurveda from a certain institute, reputed, you are the first of your class, but instead of practicing Ayurveda, you are practicing allopathic medicine. Yeah. So what you have learned in your life is how to treat Ayurvedic patients based on your own Ayurvedic wala knowledge. What I have learned is how to treat patients on my evidence-based medicine wala knowledge. Why to cross stream and to enter this stream, right? Nobody is saying कि don't treat patients. Nobody is saying कि no, हम क्या के डॉक्टर मत लिखो. But if you have learned something in your own way, treat it in your own way. Don't jump. जैसे तुम्हें अगर लग रहा है कि एक डिसीज के लिए ये हर्बल चीज प्रिस्क्राइब करने से वो डिसीज ठीक होती है,
but then you are prescribing some other drugs from the pharmaceuticals which are evidence-based medicine wale. So that is the main issue over here. So इसको cross practice बोलते हैं. That means you have studied something, you're practicing something else. So now that is the issue where most of the people are criticizing कि ये क्यों कर रहे हो. तुम आयुर्वेदा जितना करना है, nobody is saying. But once you enter our path, you have to be as educated, as qualified to prescribe a medicine as we are. And nobody is saying you are not, but you have not studied in the same way that we have. That's it. Right. Yeah, this is kind of controversial and काफ़ी लोग करते हैं. जैसे कि अगर हम क्लिनिक्स पे चले जाते हैं, क्लिनिक्स तो क्या, अगर आप दवाई लेने चले जाते हो फार्मेसी में, तो वहाँ पे जाके वो ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कई लोग उनसे पूछ लेते हैं कि दर्द की दवाई बता दो, मेरे साथ ये है. तो वो बेसिकली आर डॉक्टर्स बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस. तो उसके कारण कई बार लाइक बैड ट्रीटमेंट्स भी होती हैं. Very, very important. This is very important. So in India, this is like pharmacies work autonomously. Without prescription, you will get a lot of drugs. You will get almost any drug without prescription. So the problem happens when most of the diseases के लिए they will prescribe fine. But there are a few conditions जिसमें कुछ drugs absolutely contraindicated. Let's say that you have a fungal infection of the skin. If somebody prescribes you steroids on that, that infection is going to grow 10 times. So that is the thing कि let's say that you have some sort of infection in your ear. If they prescribe the wrong ear drops, that infection might increase and cause a lot more damage. तो ये तो होता ही यार. We see a lot of patients कि ऐसे ही हमने ये वाला ड्रॉप ले लिया था, उसके बाद से हमको और सुनाई देना कम हो गया. पहले अच्छा था, ड्रॉप लेने के बाद और बढ़ गया. तो ये तो होता ही है. And this is, we cannot do anything about it because not everybody can afford a doctor in India. कुछ लोग को फार्मास्यूटिक्स पे बहुत भरोसा रहता है. So we cannot do it except to treat the patients that we can after the mishap has already happened. और इसका एडवांटेज एनआरआईज भी बहुत लेते हैं. जैसे कि वो भाई भर के, मतलब नॉट टू नेम एनीथिंग, जैसे कि ईडीज की अगर कोई भी ऐसी चीज़ की देख लो, किसी भी चीज़ की ऐसे रिलेटेड इन कामों की, डायबिटीज़ की देख लो, बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन आती है यूएस में, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तक चले जाते हैं. और इंडिया में 10 गुना से भी सस्ती हैं कुछ वो मेडिसिन. वो भर बहुत चीप है. राइट, बहुत चीप है. तो ये तो होता ही यार. एब्सोल्युटली एग्री. और इसके बाद आपको लगता है बीएमएस या बीएचएमएस के बाद आप सर्जरी में एमएस कर सकते हो कि नहीं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा था. तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज ब्रिज कोर्स व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड. सो इन ब्रिज कोर्स व्हाट हैपेंस इज व्हाटएवर स्ट्रीम तुमने की है आयुर्वेदा और होम्योपैथी, you can take a bridge course and you can land in the same point as an MBBS aspirant, MBBS student. So that was very bad. It was an outrage which happened bridge course के कारण. आपको लगता है कि ब्रिज कोर्स इज नॉट ग्रेट क्योंकि आपके पास बेसिक्स ही नहीं बिल्ड अप? आपके पास बेसिक्स होम्योपैथी के, बेसिक्स आयुर्वेदा के, आप कहाँ से सर्जन बन जाओगे? It is not possible. So स्टार्टिंग से ही बच्चों को अपना डिसीजन राइट लेना चाहिए. Right, yeah, exactly. और नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ यूएस, मैंने देखा कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत से डॉक्टर्स इंडिया से आते थे एंड नाउ द नंबर हैज़ रिड्यूस्ड. लोग बाहर डॉक्टर बन के जाना जितना प्रेफर करते थे इन द पास्ट, दैट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एंड लोग इंडिया में प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहते हैं इन द पास्ट, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड आपको क्या लगता है, व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट इंडिया हैज़ चेंज्ड? Yeah, so I think that with respect to this, I would say like the seats with respect to your courses have increased quite a lot. So recently in Maharashtra, every college got a 50 seat upgrade. So there are like 29 colleges in Maharashtra. सबको 50 seats add कर दिए तो you get 1500 seats extra. So a lot more people will now become MBBS students in Maharashtra and many other colleges. Right? Government college, right? Yeah, in government colleges. I think that it happened in private colleges as well. Yeah, it did happen. So it happened pan Maharashtra. So a lot of increase in seats, that definitely causes retention in your own country. क्योंकि तुम्हें यहीं पे मिल गया, तुम्हें कहीं जाना नहीं है. Similarly with MD and MS also. So the seats are increasing almost every 2 to 3 years. So I think the reason like people are getting UGs here and PGs here, that's why they are not moving out. That is incredible. यार ये बहुत बड़ा फैक्टर है. एंड आपका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा? आपका भी योर गोल विल बी टू प्रैक्टिस इन इंडिया और वुड योर गोल बी टू एटलीस्ट स्टडी अब्रॉड? क्या होगा आपका गोल?
Yeah, so my main goal is to stay in India and to practice in India because like, there's an emotional attachment to India. My family is here, which is a very important pillar of my happiness. So I cannot just leave that. And you already know the struggles of living in a separate country are something unimaginable, right? So we एक तो चीज है, but apart from that, की I would definitely want to go somewhere for 1 year, get some degree, and come back. But as far as main practice, though, I would only stay in India. That is final. दैट इज़ इनक्रेडिबल। आपको बताता हूँ, बीइंग फ्रॉम पंजाब, मेरी फैमिलीज में बहुत डॉक्टर्स हैं, पर उनकी क्लासेस में, उनके बैचमेट्स में जितने भी डॉक्टर्स थे, अगर वो 10 फ्रेंड का ग्रुप था, उनमें से 9 बाहर हैं। अब नाउ इट्स सिग्निफिकेंटली चेंज्ड एंड इट्स रियली हैप्पी टू नो कि लोग इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू यू नो बाय कमिंग अब्रॉड। इवन दो मुझे पता है कि अभी भी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन व्हाट यू कैन डू एज अ डॉक्टर financially in US and abroad as compared to India. I hope that also changes soon. Yeah, I don't think it will. I hope that it does, but honestly speaking, realistically speaking, it won't change. But yeah, sure, it is quite different. Well, US में you can earn in millions easily as a doctor, but here earning in millions is 10 years का job. डॉलर्स में अगर तुम बात करो तो वो तो डिफिकल्ट होता ही है। वाओ, इनक्रेडिबल यार, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत कुछ सीखा आपसे। माय लास्ट क्वेश्चन विल बी कि आपने मेजॉरिटी ऑफ ए कॉलेज आपने घर से पढ़ाई की, राइट? ट्रू। और मैं यूजुअली, मेरा मानना है, मैंने बहुत प्रोडक्टिविटी की बुक्स पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स। एक माइंडसेट चेंज हो जाता है जब आप ऑफिस जाते हो, आप अपने बेडरूम से बाहर पढ़ते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लाइब्रेरी में ज़्यादा होती है। सो हाउ वर यू एबल टू हैव प्रोडक्टिव माइंडसेट बीइंग होम? ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन है तुम्हारा। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इवन आई स्ट्रगल टू स्टडी फ्रॉम एट द सेम प्लेस, ठीक है? घर पे तो स्पेशली इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। द डिस्ट्रैक्शंस आर टू मच, राइट? So in between my final year MBBS, from the starting of my final year MBBS, I was like, yeah, it is so difficult to study nowadays. Like this wasn't the case 2-3 years back जब मैं 12th में इधर ही बैठ के पढ़ रहा था तो. So that inertia hit me quite a lot. So I started going to the library. So GMC Nagpur has an excellent library, and I started studying over there. And I used to sit almost the entire day, मतलब morning 7 o'clock till night 9. So I used to have my dinner, my lunch, my breakfast, everything in the library, which ka snacks, doston se milna. It was all part of the library. So I think the fact that library exists in our college, it is so well equipped. So even in hostels, what happens? Hostel पे पढ़ने का मन नहीं होता है. जैसे because hostel becomes your home by the end you are staying for 3 to 4 years, it becomes your home. तो कुछ फर्क नहीं रह जाता, यहाँ पे रहो या घर पे रहो, तुम नहीं पढ़ने वाले. So most people in MBBS, we go to libraries. So library is a very productive place. You see 10 people studying, you study yourself. So I joined the library, and when I was studying at home, like for example COVID and all of that happened, so I used to change the study position a lot. तो कभी मैं टेबल को इस ओरिएंटेशन में, कभी दूसरे ओरिएंटेशन में, कभी सीटिंग इधर, कभी उधर. So this was something which I used to practice a lot. So that helped me a lot. If you go watch my Exam Saga season 2 and season 1, in that you will see like there are 3-4 places. उस एक ही एपिसोड में 3-4 जगह बैठता हूँ. एंड दैट वाज एपिसोड व्हिच वाज रिकॉर्डेड अक्रॉस 1 वीक. सो इट वाज लाइक, इट जस्ट शोज व्हाट आई एम टॉकिंग की व्हाट यू हैव सेड इज वेरी वेरी ट्रू कि एक ही जगह पे एनवायरनमेंट रियली मैटर्स अ लॉट. या इट माइंडसेट ही चेंज हो जाता है कि यार मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो मेरा गोल है पढ़ना, तो पढ़ूंगा ही, और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बनती नहीं बात. सो दैट इज़ एक्सेलेंट कि आप अपने घर में 2-3 जगह आपने सेट की हुई है कि ये जगह पढ़ाई के लिए है, ये जगह एंटरटेनमेंट के लिए है, और ये जगह फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए, एंड उसके कारण ये जगह फिल्मिंग के लिए है. हाँ, एक्सेलेंट यार, बहुत कुछ सीखा आपसे. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टाइम. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स इन मेकिंग in helping students make a better decision towards their career and becoming a doctor as well. And congratulations once again. Yeah. Thank you so much, Anuj. It was amazing talking to you. I hope we can do this someday again on my channel. Absolutely. And reach many more people. So yeah, really nice talking to you. It was really informative. And he's such a humble guy, everybody who is watching. Like, जैसा exactly vlog में दिखता है ना, वो real life में भी ऐसा ही है. So I would say कि subscribe if you haven't already to his channel. Amazing content creator. And कभी-कभी ये out of the topic में वीडियो बनाता है, but I think that it is personally worth it. So keep it up and all the best. Yeah, and everyone must check out Dr. Anuj's channel as well. Thank you. Yeah. I just wanna be your Superman. Come fly with me, just take